Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Nivedita Raje and today we are going to introduce CLAT 24 along with a strategy with which you can begin your preparation of legal reasoning section, right? So, how are you all? Good evening guys. How are you all? क्या चल रहा है? आज result आ गया है. Some people might be a little, not happy with it. But that's how life is. Sometimes, you get it. Sometimes you don't. So you get some, you don't. You lose some. That's how things work. कोई बात नहीं. Don't get disheartened and begin your preparation afresh. For those of you who are starting new, this is the time when you start. Like I said yesterday, यही time है शुरू करने का. And those of you who couldn't do it, you should again start, right? शुरू से शुरू करें. Analyze where you went wrong. Do a proper analysis of what mistakes you did. What mistakes could you have avoided? So yes, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. Even if you're securing a lower ranked NLU, I would suggest that you go for it. आप उसे select कर लें. But keep preparing for CLAT next year. December में ही CLAT हो जाएगा, so not a bad idea, right? और keep preparing for it. लगातार अपने आप को keep working on yourself, keep improving yourself, your skills, whatever section you were not great at, right? And towards the end, since you already have taken the exam, you have understood the pattern of the exam and everything, so it won't be that difficult for you, okay? ये क्या हो गया? Oh. Right, so it's not moving for some reason. Why is it not moving? अरे? Oh, चला गया. Yes, so this is the agenda for today. We are going to have an overview of CLAT 23. What is legal reasoning, key sources to prepare, and so on. So this is the overview of CLAT 23, happened just now, few days before. And we also have the results today. English language had 30 questions, 6 passages. Current affairs had 35 questions, 5 passages. Legal reasoning again, 40 questions, 8 passages, something that happens every year and will continue happening. Legal reasoning is the biggest section, it will always be. So, this is why you need the maximum number of strategies for this particular section. Then we have quants for 15 marks and logical for 30 marks. Quant thoda sa difficult tha. The one question was even withdrawn. It was not as difficult if you were preparing properly, right? There were some things that Ankur sir was emphasizing upon for an entire year. Some students listened, but some did not. And if one did really work for this section, the section seemed difficult, but it wasn't. Okay. For some reason, it doesn't move. I don't know what to do. It's... What is happening? Oh. कुछ इसका remote control खराब हो गया है. Should not happen. So this is the analysis. This is what we had this year. Okay, ये सारे passages आए थे. Criminal Procedure Identification Act was something that was discussed when we used to discuss Supreme Court judgments, right? So every session I used to emphasize, guys, this is an important series. Supreme Court is the apex court of this country. Whatever comes out of it becomes important automatically. And we had that entire series. Some students took it seriously, some did not. But overall, if you think about it, legal reasoning was the easiest section of all. It was the easiest section of all. Did not disappoint. Nothing was extremely hard. Even the passages that students might not have read before or might not have understood before did find this section extremely easy. So we had free legal aid,
internet shutdown, very basic Anuradha Bhasin case, cruelty by husband, surrogacy, something that we discussed over and over again. Consumer protection, this was something that was discussed in paid batches, like we did tell our students it is important. Blocking social media accounts, Article 19, freedom of speech and expression. Electoral bonds, Vidhan Sabha elections are getting conducted, so this was something that could be asked. Now this is law of crimes, free legal aid is, it's a NALSA fact, did not really pertain to a law per se. Then we had constitution, crimes, and again a lot of miscellaneous was there. So torts and contracts were entirely missing, like they were not there completely, not at all. Something that I did not think could happen. But अब जो है वो है, ये हमारा 23 में सब कुछ आया, ठीक है. पैसेजेस सारे लेंदी थे थोड़ा पढ़ने में, they seemed difficult, they were lengthy, but they were very easy. इनको पढ़ के, इनको समझ के सॉल्व करना काफी इजी था. ओके, तो ये रिमोट बहुत देर में काम करता है, कुछ इसका सिग्नल शायद वीक हो गया है. Right, so let's have a look at the type of questions that have been asked. We had application based questions. Now there was something that I discussed during the classes. Sample paper 2 did ask a lot of yes and no questions, right? And we were predicting that there would be a lot of yes and no questions in the exam also. And that was true. There were a lot of yes and no questions. In fact, maximum questions were yes and no. But application based questions से काफी easy थे और उनको solve करना काफी आसान था. If a child was preparing for a long time, अच्छे से preparation कर रहा था, legal reasoning पे ध्यान दे रहा था, तो फिर legal reasoning को अच्छे score के साथ qualify करना बहुत easy था इस बार. Okay? Oh. अब मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रिक समझ आ रहा है इसका. फर्स्ट यू सेलेक्ट द माउस, देन यू डू दिस एंड देन इट मूव्स. ये तो आगे बढ़ गया. ओ 25% of legal reasoning was there. So in this sections, that is what you are supposed to do. You are expected to read passages of around this much, these many words. They may relate to factual situations or scenarios that are involving some current events, right? If you are aware generally, like you have been reading newspapers, you are familiar with your surroundings, what is happening in the country or in the world regarding a legal fraternity, then legal reasoning becomes not a cakewalk but relatively easy, right? Because you are able to understand and analyze things from a legal point of view, and that gives you a perspective. और जैसे ही वो perspective आ जाता है, legal reasoning को tackle करना आसान हो जाता है. If you start thinking like a lawyer, if you understand the passages, if you understand what the legal terms mean, legal reasoning actually becomes very interesting and very, very easy, right? Even if you're faced, or even if you're reading a passage which you have never read before, despite that you'll not panic, you'll read it and you will be able to solve the questions. अब ये proper guidance में आता है, you know, since when you're preparing under a proper mentor, when you have a routine, when you have classes and everything, we teach you all these things. So they seem difficult, they might look extremely challenging, but they're not. ठीक है. गाइडेंस के साथ जब आप प्रिपेयर करने लगते हैं, जब आप लगातार क्लासेस लेते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं पैसेज को, तो फिर ये भी समझ आने लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ऑल दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बट देन यू हैव टू बी अंडर अ प्रॉपर मेंटोरशिप, you have to be under a proper guidance. If you start doing all of that on your own, will become very difficult, very difficult. I'm not saying it's absolutely impossible, but it's very difficult. So each passage is followed by a series of questions that will require you to identify and infer rules and principles set out in the passage, and that principle is to be applied to the factual situation that is given in the questions. ठीक है. अब इसके लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल जो पैसेज में दे रखा है आप उसे समझें.
अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स इफ दे आर completely unfamiliar with law, it takes time, they take time to understand the gist of that principle or the tone of that passage. पैसेज किसी पर्टिकुलर लीगल प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, लॉ से रिलेटेड तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, माइट बी फ्रॉम टॉर्ट्स, राइट, एंड there are just so many principles, you cannot definitely concise them, but if you are familiar with what the author is trying to tell you, अगर ऑथर बात कर रहा है तो किस चीज पे कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे कर रहा है. अच्छा, वी नो व्हाट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज. इट इज एन एक्ट दैट इज देयर टू protect the interests of consumers. Now, who are consumers was there in the passage, right? Criminal Identification Act. What is criminal identification? You need to know what is identification. You need to know the process of investigation and why the investigating authorities need to have identity or, you know, something that they can use to identify criminals or convicts and keep their records, etc. Free legal aid क्या है, क्या ये legal right है, क्या ये fundamental right है. अब ये सब चीजें अगर आपको पता होती है पहले से ही तो अगेन पैसेज इजी हो जाते हैं. वो सारे बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू पढ़ रहे थे, जो बायजूस के स्टूडेंट थे या कुछ भी, उनके लिए पैसेजेस रिलेटिवली इजी थे क्योंकि लॉ उनके दिमाग में पहले से ही है, कंसेप्ट्स एम्बॉडीड हैं और उन कंसेप्ट्स को फिर से पढ़ना और उन्हें समझना एग्जाम टाइम पे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ उनके दिमाग में ऑलरेडी है. इट्स एज इफ दे आर रीडिंग समथिंग दैट दे आर सो good at or they understand so well, right? So this is the topics that you may focus on. Now, law of torts is basic definitely. हालांकि law of torts इस बार बिल्कुल पूछा नहीं गया, but पूछा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि कभी पूछा ही नहीं जाएगा. Even if they were not asked at all, it is not, we cannot assume or decrease or doubt their significance in the exam. No, there are still very important laws, and CLAT consortium is sort of habitual of focusing on one particular law. Last year it was constitution, right, and this year it is miscellaneous. Like they have focused on multiple areas, multiple facets, generally from the current point of view. राइट, नेक्स्ट ईयर क्या पता सिर्फ क्रिमिनल पूछ लें, क्या पता सिर्फ टॉर्ट्स पूछ लें, कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ लें. तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, इसलिए हम सब कुछ पढ़कर जाएंगे, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली, लॉ ऑफ द लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता. अगेन, लॉ ऑफ क्राइम्स इज ह्यूज. इट हैज क्रिमिनल प्रोसीजर, इट हैज एविडेंस, इट हैज आईपीसी, but then again not everything is important. This is only a certain chunk which is important. Miscellaneous covers everything, but everything is not everything, right? For everything there's a law in this country. Even if you're riding a bike, there's a separate law on it. If you're buying furniture, there's a separate law on it. अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है तो लॉ है, कुछ लिखा है तो लॉ है, कुछ भी आप कर रहे हैं लॉ है. हर चीज के लिए लॉ है, एक स्टैट्यूट है, राइट? आप कितना पढ़ लेंगे? हाउ मेनी स्टैट्यूट्स वुड यू रीड? तो मिसलेनियस को कंसाइज करना या किसी एग्जॉस्टिव लिस्ट में कन्फाइन कर देना इज इम्पॉसिबल, बट वी डू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी आस्क्ड, है ना. मिसलेनियस जनरली करंट टॉपिक से डील करता है. कोई ऐसी चीज है जो बार बार डिस्कस की जा रही है, जो न्यूज में है, जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जिस पे बहुत सारे लोग ओपिनियन दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, लिख रहे हैं, आर्टिकल्स हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, वो टॉपिक जनरली इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर वो किसी पर्टिकुलर लॉ से पर्टेन कर रहा है तो वो लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा लॉ पढ़ लेंगे, नहीं. अगेन, एक छोटा सा चंक जो आपको एक बेयर मिनिमम नॉलेज उस लॉ के बारे में दे दे, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट. अब बायजूस का जो सिलेबस है वो इसी तरह से बनाया जाता है. इट्स अ डायनामिक सिलेबस, इट इज नॉट स्टैटिक. लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम तो है ही, लेकिन मिसलेनियस में कोई कुछ भी एग्जॉस्टिव नहीं है. मिसलेनियस चेंज होता है हर साल के हिसाब से. जिस साल जो लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वही पढ़ाया जाएगा और उसी से रिलेटेड पैसेजेस को आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है. Law of torts is definitely something extremely important, even though it was not asked. So these are the topics that you can focus on.
absolute liability, etc. They're very important. They have been asked before also. Vicarious liability, state liability, general defenses, tortfeasors, remedies, trespass, negligence. अभी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इनके फसेट्स काफ़ी मल्टीपल हैं, राइट? सो इनको देखना जितना मुश्किल लगता है, पढ़ना उतना ही और मुश्किल हो जाता है. So it's difficult for an 11th, 12th class students to have an understanding or, acquire an understanding of these concepts all on his own, all on her own. I'm not saying it is impossible, but it is again very challenging, very difficult. Then we have law of contracts. So this is what we have in law of contracts. We have free consent, nature and formation of contract, void, voidable, illegal, enforceable, performance, quasi-contracts, consequences of breach of contract, contract of indemnity, guarantee, insurance. Sorry. Agency, basics of Indian Sales of Goods Act, Indian Partnership Act. So this is all in the law of contracts. There's a little more जो कि paid batches में पढ़ाया जाता है. Then we have constitution. Constitution में everything seems important because obviously it is law of the land, but not everything is important. Indian political science GK का पार्ट है. लीगल में पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी तभी पूछा जाएगा अगर उसका करंट में कोई रेलेवेंस हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर हैज बीन एन अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, CAG, ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर, CG, you know what that is, right? CAG. Ab CAG is a constitutional body, so this becomes important, and any appointment which has been done over the years, pehla aakhri IDK, I don't know how to say this, but no. Yes. नहीं, क्लैट जून में नहीं होगा, क्लैट दिसंबर में ही होगा, दिसंबर 23 में होगा क्लैट. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी ऐसा करंट इवेंट्स में रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस बनाया जाता है. इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, कीप इन माइंड, कीप अ ट्रैक ऑफ all the events that are happening around you, and if they pertain to law of the land, Supreme Court judgments, anything that has been done, a bill or policy, anything, it is important. Any appointment, etc., revolving around the constitution is important. Then we have law of crimes. There's so much more than this. This is actually nothing. Law of crimes में और भी बहुत कुछ है. कुछ presumptions होते हैं, कुछ basic understanding होती है. Crime मुश्किल से समझ आता है. सबसे ज़्यादा difficult crime ही होता है बल्कि, राइट. इंटरेस्टिंग भी है बट डिफिकल्ट भी है. तो मर्डर इज नॉट जस्ट किलिंग समबडी. कौन से सिनेरियोज में व्हाट एक्ट विल बी डिफाइंड एज अ मर्डर, राइट? इन विच सिनेरियोज कैन अ पर्सन बी कॉल्ड अ मर्डरर? हाउ इज मर्डर डिफरेंट देन कल्पेबल होमिसाइड? व्हाट इज किडनैपिंग? हु कैन बी किडनैप्ड? हु कैन बी abducted? What kind of the offense is theft? When can we say that the person is a thief? Right, so crime is extremely complicated because of the essentials of each and every offense. So every offense comes with the necessary prerequisites, and until those prerequisites are qualified, that person will not be convicted for that particular offense. Now, to understand those prerequisites, you need to have a certain understanding of criminal law, and that's what you get when you watch the sessions, right? Miscellaneous, this is again not it, a lot more depending on the current relevance. Okay, so this is what a legal reasoning section demand. You need to have a good reading speed. Reading speed is a must. If you really wish to qualify CLAT and you are sincere and serious about it, you need to be a good or a decent, at least a decent reader. If you have below average ability to read and understand English, CLAT is not for you, right? And when you start on time, like this is the right time, December, you have almost 12 months completely at your hand. So if you start right now, there are other skills also that you can acquire because you would be having a lot of time, right?
सो अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो आपके पास टाइम बहुत है। सिलेबस को ख़त्म करने के अलावा और बाकी जो 6 स्किल्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप उन पे भी काम कर सकते हैं, है ना। कंप्रिहेंशन एंड गुड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, कंप्रिहेंड व्हाट द पैसेज इज सेइंग, अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द ऑथर, एनालाइज द प्रिंसिपल्स एंड देन अप्लाई देम टू द गिवन फैक्ट्स। Basic knowledge of law, terminology of law, etc. is definitely needed, because you cannot read a legal concept in the middle of the exam in that pressurized atmosphere and then be able to crack it. Very difficult. वो प्रेशर इतना होता है कि आता हुआ भी भूल जाता है बच्चा, जो उसने पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल जाता है। तो जो चीज़ पढ़ी ही नहीं है उसको इतने पैनिक वाले एटमॉस्फेयर में समझना और उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, वरना लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स बहुत मुश्किल हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, आप एडवेंचरस भी नहीं हो सकते। करंट लीगल इश्यूज जो भी कंट्री में हो रहे हैं, इनफैक्ट जो वर्ल्ड में हो रहे हैं, उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बेसिक से थोड़ी सी ज्यादा, पूरी पेरिफेरल नॉलेज नहीं चाहिए होती है। आपको अच्छे से समझना होता है कि हो क्या रहा है। अगर विधानसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं तो आपको विधानसभा का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इलेक्शंस कैसे होते हैं समझना पड़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इलेक्शंस को, विधानसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी क्या है, कौन से आर्टिकल में या कौन से सेक्शन में उसको अपनी पावर्स मिली हुई हैं, राइट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या हो जाता है, इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को उनका साइन कौन देता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कौन करता है। सो बेसिकली भाई, अगर कोई चीज चल रही है, कोई चीज कंट्री में चल रही है, तो उस चीज से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे फैसेट्स है वो सब आपको पता होना चाहिए। अगेन, पूरा साल है, इसे करने का टाइम है। अगर एंड तक वेट करते रहे तो कितना कवर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट एट द राइट टाइम। Okay, these are the key sources where you can prepare from. Newspaper, definitely. Newspaper doesn't just give you knowledge, GK, current affairs, current legal, etc., but it also makes you a confident person. It makes you aware, and an aware person is generally a very confident person. And when you read newspapers, you start reading, you start practicing योर रीडिंग स्किल्स। धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए न्यूज़पेपर को हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मस्ट माना जाता है। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट गिव्स यू सेंटेंस फॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सिनोनिम्स, वोकैब। इट इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी। That way you can work on vocab and synonyms questions that are there in the English section. Then it gives you a basic understanding or a good reading practice, which is, very important, very essential when it comes to CLAT. It gives you knowledge both in legal reasoning and in GK current affairs. GK current affairs, legal reasoning are about 50% of the entire paper. और newspaper इसको काफी हद तक cover कर लेता है। No, Devanshi, CLAT will not be conducted twice. It is conducted once every year, and next year it will be in December 2023. Okay, previous year papers give you an idea of what kind of questions are generally asked. Okay, so whatever kind of questions that they have been focusing on gives you an idea of what kind of questions come in the exam. क्या level of English है, किस तरह के questions हैं, आपके दिमाग में एक familiarity हो जाती है कि किस तरह के questions आते हैं, right? Then these are the newspapers that we recommend you to read. The Hindu, Indian Express, Times of India, anything that you want actually. Okay, these are the case sources. You can read important judgments. You can also attend the sessions that we take on YouTube. Indian Qanun, nobody read it. Live Law, Bar and Bench, both are paid websites, but if you can afford them, not a problem. iPleaders, I would suggest do not read or go for iPleaders, because they're actually, the articles are written by fresh graduates, not even fresh graduates, children who have just joined law. So they themselves are very confused about the topics. They copy paste from different sources. There are too many mistakes. Do not go for this. Wire is sort of left winged. So if you don't want to become opinionated, I would suggest don't go for this. Okay.
Mock tests. The best way to practice for any competitive exam is to take the competitive exam or the tests based on that exam over and over again. और कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं, उस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको लगातार करने हैं. Obviously, when you start with the mock test, the score will not be as high, but eventually it will start increasing. Half preparation, half score. 10% preparation, 10% score. So don't be disheartened. Keep in mind that I have just started preparing. Obviously, I cannot bear a fantastic result overnight. No, you'd have to work hard for it. But when you start taking mocks, you'll get the idea of how to solve the passages. You'll understand what strategy you need in order to finish the paper on time. So this is something that you can gather yourself only. No faculty can teach you. No mentor can tell you what to do. So some effort obviously has to be from your end only. And taking mocks and analyzing mocks and devising a strategy to solve them more efficiently in lesser time is something that only you can come up with. लेकिन ये होगा कब? ये तभी होगा जब आप regularly mocks को देंगे, है ना? Attend lectures को miss नहीं करना है. Whatever institution you have joined, if you are a BYJU'S student, make sure that you are attending sessions and lectures, no matter where they are. These sessions, keep you in a certain discipline. They keep you disciplined. They keep you tied or knitted in a fabric of studies. Like you are in a certain routine. और वो routine में ही अगर आप consistently बने रहते हैं, CLAT qualify हो जाता है. ठीक है. कंपटीशन में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये डिसिप्लिन और ये रूटीन जो है वो किसी कोचिंग से ही आता है, किसी गाइडेंस में ही आता है. इसलिए जितना इम्पोर्टेंट कंपेटिटिव एग्जाम होता है, बच्चे उसकी कोचिंग सबसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अपने आप तैयारी मुश्किल नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा खुद को डिसिप्लिन करना, उतना स्ट्रिक्टली खुद को एक पर्टिकुलर रूटीन में बांधना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. राइट, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. कब तक आप ओवरलुक कर लेंगे उन डिस्ट्रैक्शंस को? लेकिन आपको पता है कि 4 से 5 मेरी क्लास है, तो आप क्लास अटेंड करने ज़रूर आ जाएंगे. आपने बिना मन से ही क्लास अटेंड करी, आप 15 मिनट भी ध्यान दे लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा. राइट, धीरे धीरे वो क्लासेस आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी और आप अपने आप ही रूटीन में आ जाएंगे. 4 से 5 मुझे पढ़ने बैठना है क्योंकि मेरी क्लास है. राइट, बस जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, और सोने से पहले वो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, या उससे रिलेटेड 2-3-4 पैसेजेस सॉल्व कर लीजिए. यू आर सॉर्टेड. इसी को पूरे साल, इसी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए. क्लैट रैंक के साथ निकलेगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं. इतना कुछ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. तो कोई सीक्रेट वेपन नहीं है इसको क्वालिफाई करने का. कंसिस्टेंटली, सिंसियरली प्रिपेयर करते रहिए, एग्जाम निकल आएगा. These are the key takeaways for CLAT 23, from CLAT 23 for CLAT 24. Practice as many passages as you can. Focus on accuracy. Knowledge of important provisions, articles, sections थोड़ी सी important है. Landmark judgments बहुत important है. कोई अगर ruling hold हुई है, कोई law hold हुआ है, किसी को challenge किया गया, वो important है. Keep a track of legal news and legal current affairs. Important legal judgments and current legal rulings give you a perspective, a base to understand recent development. So this is what you need to do when it comes to CLAT 24, because this was something that was required from a student who is preparing for CLAT 23. जिन्होंने ध्यान रखा उन्होंने कमाल का रिजल्ट दिया है. आप ध्यान रख लेंगे, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा. So this is our topper, Anika Sehgal. She has scored All India rank 18 for ALIT. She's also scored rank 71 in CLAT. So that is it for today, guys. Thank you so much. For more lectures like this, these lectures keep happening. ठीक है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको बिल्कुल टाइम पे, उसी टाइम पे चाहिए. So if you have not subscribed to our channel, do it and press that bell icon so that you are notified of all the videos that we are releasing. You can also follow us on Instagram. You can like us on Facebook. You can join our Telegram channel. You can also download our app, right? And I shall see you tomorrow. Till then, everybody take care. Bye-bye. Thank you and good night.